So let's start a new lecture on new series on electric charges and electric fields. So now we are going to cover up the second part of our physics series. जो लास्ट सीरीज हम लोगों ने मैकेनिक्स वन देख लिया. अब इस सीरीज़ में वी आर गोइंग टू सी इलेक्ट्रिसिटी टिल करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर वी आर गोइंग टू कंप्लीट आर पार्ट टू ऑफ आर फिजिक्स सीरीज अप टू करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो जितना भी फिनोमेना रिलेटेड विद करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा. Later on we are going to cover up magnetism, but this one we are going to cover up to current electricity. ठीक है, और series वन में we have seen the mechanics up to work energy power, where we have covered the uniform circular motion, that those topics also we have covered. ठीक है, सो हमारा सीरीज टू में जो पहला हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. उसका लेक्चर नंबर 1 है आज हमारा. सो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे मोटा मोटा, दैट आई एम गोइंग टू, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट लेक्चर, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू ब्रीफ आइडिया. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चार्जेस, चार्ज से रिलेटेड फिनोमिना जो भी होंगे. सो इन दिस चैप्टर वी आर मोस्टली गोइंग टू स्टडी द चार्जेस एट द रेस्ट. तो उसके अंदर चार्जेस एट द रेस्ट के अंदर तो मेन थिंग इज़ फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द चार्जेस होते क्या हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं चार्जेस की, एंड द फिनोमिना रिलेटेड विद द चार्जेस. ठीक है, उसके बाद देन वी आर गोइंग टू स्टडी द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, एंड द फोर्स रिलेटेड विद दोस चार्जेस. उसके बाद देन वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ेंगे, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉइंट चार्जेस, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द continuous distribution of charges. ठीक है, and lately in the last we are going to study dipole and the related phenomena with electric dipoles. तो this is the part of our chapter 1 scope. So ये चीज़ें we are going to cover. ठीक है, so lecture number 1 में हम लोग देखेंगे आज. we are just starting, we are just beginning with our new series. तो हम लोग थोड़ा दिस इज़ टोटली डिफरेंट फिनोमिना. अभी तक हम मोशन पढ़ रहे थे. फ्रॉम मोशन वी आर स्विचिंग ओवर टू नेक्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो विल सी अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन कि how we have reached up to this point, and we are going to see कि the historical development of electricity and magnetism, फिर उसका यूनिफिकेशन कैसे हुआ, एंड हाउ इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न साइंस एंड द मॉडर्न एजेस. ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे. देन वी आर गोइंग टू स्टडी के चार्ज के हाउ द स्टेट ऑफ द चार्ज विल गिव यू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म or the electromagnetic waves. ठीक है, we are going to see the how if the charge is stationary or the charge is moving, then what phenomena it is going to produce. ठीक है, then we are going to study a bit of static electricity. So that's the first thing we have ever studied, we have ever scientifically inquired in the electricity and magnetism. So we are going to study that, because after this only we have inquired about the electricity, then magnetism, the electromagnetic wave. But the first thing is which was observed to us was the static electricity. So that is the one thing, that is the first thing we have studied on the so this is we are going to see static electricity. Then we are going to study the electric charge, जो कि हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद द चार्ज. ठीक है, then we are going to study the charge distribution on the conductors and insulator. If we give the charges to conductor and insulator, how they behave on the how they behave when the charges has been given to them. So we are going to get a brief idea. ये हम लोग we are going to study that when we are going to study potential also. There also we are going to study these two phenomena, and capacitor also we are going to study this phenomena. But here I'm going to give you a initial understanding of charge distribution. ठीक है. Then we are going to study a device which is known as electroscope, which will help you examine the magnitude and the magnitude of the charge, and so we'll see different scenarios in which the electroscope will give you the magnitude and the kind of charge it is holding. And the last we are going to study the charging of a body through friction, through induction, and through conduction. These are the things we are trying to cover up in today's lecture. Okay. So let us start. We'll start with the introduction. Okay. So electricity and magnetism से जाने से पहले first we will see के how we have reached up to this level. So हमने देखा था, हमने first जब हम पढ़ रहे थे why physics वाले lecture में, we have seen the institutional why कि the curiosity needs to be developed first to understand the physical phenomena which is happening around us. तो curiosity सबसे पहले वो डेवलप होती है जो कि हमारे को immediately visible चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो
this electricity was never visible. Even now also it is not visible, but through the experimentation and further our curiosity, we have got to know a lot about electricity. But imagine long back in 1600 600 BC and all, when it was first discovered, something related with electricity. But at that time, the scientific inquiry was never been developed into the line of understanding of the electricity, because उस time जो immediately available चीज़ें थी हमारे पास, that was to understand the motion, understand the motion of planets, understand the motion of sun, understand the motion of rivers. जो भी हमारे को immediately visible चीज़ें थी, हमको उसके बारे में के मोशन में पहले समझना था, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी थी, वो हो क्यों रहा है, उसके बारे में पहले तो काइनेमेटिक समझनी थी उसके, फिर उसके बारे में उसका रीज़न समझना था, वाई इट इज़ हैपनिंग. सो दैट्स वाई फर्स्ट टाइम पीरियड ऑफ आवर डेवलपमेंट वॉज ऑलवेज टूवर्ड्स द थिंग्स विच आर विजिबल टू अस. ठीक है, फिर धीरे धीरे हम लोग वो चीज़ें समझते हैं, वी डेवलप अ बिट मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिनिमम सेट ऑफ लॉज हमारे को समझ में आ जाते हैं, देन वी गो टू द एडवांस लेवल. सो देन इट वी कम्स टू द नेक्स्ट लेवल. ठीक है, देन सो डिस्पाइट के हमारे को फर्स्ट ऑब्जर्व फिनोमेना 600 BC में मिल गया था इलेक्ट्रिसिटी का, बट वी हैव नेवर इंक्वायर्ड इनटू इट बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू इंक्वायर एट दैट टाइम. Okay, so we were inquiring about the motions at that time. So up to 1600, up to 1700, we have never inquired into the electricity. We have only kept it at a silent mode. Okay, we were only working on we were only studying the motion and all. So up to the Newtons and all, we have studied only the motion. Okay, then later on the curiosity developed in 1600, 1700. Okay, at that time we have started getting to know about कि what is this invisible force which is attracting. So first phenomena जैसा कि हमने देखा 600 BC में ऑब्जर्व हुआ था. थेलीस करके एक ग्रीक फिलोसफर था. He has rubbed an ember with the animal fur and that attract some of the some bits of the straw, ठीक है, or the dry leaves from the distance. So what is this invisible force which is attracting this thing? So it was just the effect but no cause unknown. So बस ये effect पता लग गया था, some attraction is happening, so some invisible force is there, but they have never scientifically inquired into it. ठीक है, so it was kept in a silent mode. Okay, then there are other observation in the later period, it's been seen, but it was never been inquired into. Like for instance, if you rub a balloon and it will stick onto the wall, and the lightning happening, lightning was also in quite a natural phenomena, so it was continuously happening in the past days also, but it was never inquired. But later on in 1600, 1700, it was inquired by Benjamin Franklin that lightning is nothing but the electrical discharge, it is a electrical phenomena. It is later been studied by Benjamin Franklin. Then electron was orbiting about the nucleus. So this electron was orbiting about the nucleus. We were never known why it is orbiting, why it is not flying off, why it is not spiraling inside into it, why it is not going into this nucleus. So these were the observation being made, but the inquiry later on started. ठीक है, इनके बारे में observation made करी, then the inquiry started later on. But this was quite an old observation, 600 BC में. But उससे लेकर 1600 से 1700 तक we have never inquired into the electricity and magnetism. इसके बाद से हमने inquire करना शुरू किया. We have started doing the experiment which is linked with electricity, static electricity. So इसमें भी सबसे पहले हम लोगों ने इंक्वायर करना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे. इफ़ वी गिव द चार्ज टू वन बॉडी, सो हाउ दैट बॉडी इज गोइंग टू, if how that body is going, how the conductor and the insulator after being charged it's been behaved. So those have been studied in 1600 and 1700 by Stephen Frey. Then later on our Benjamin Franklin has done the kite experiment. तो kite experiment जब उन्होंने किया था, kite experiment, so in that kite experiment में he has concluded that lightning is nothing but the electrical discharge, it is a kind of electricity only. Then he also coined the terms positive and negative for the charges, positive charge and the negative charge. He is the first one who has coined this term, Benjamin Franklin. Then later on हम लोगों ने सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझना शुरू किया कि इलेक्ट्रिसिटी जब मेरे चार्जेस जो हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को फिर वी वांट टू डेवलप समथिंग कि व्हाई दिस इलेक्ट्रिकल थिंग्स इज हैपनिंग, व्हाई ऑल दिस इलेक्ट्रिकल फिनोमेना इज हैपनिंग. सो टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, सो वी हैव to conclude those invisible forces, or to conclude those electrical interaction in 1600 1700, we have led to the discovery of charges. ठीक है, तो charges is the fundamental property of a matter which led to the
this cause of this electrical and the magnetic interaction. ठीक है, अभी तक magnetic interaction अभी भी नहीं समझ में आए थे, अभी भी हम लोग ने चार जो डिस्कवर किया था, it was for the static electricity. ठीक है, फिर धीरे धीरे once we studied the stationary charges, then we started studying the moving charges. फिर moving charges को समझना शुरू किया. Then from there we have started studying the current. From that current then we have seen the phenomena of magnetism. ठीक है, so in that magnetism जब हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के मोशन को स्टडी किया, तो हमारे को एक फिनोमेना तो करंट मिल गया. फिर दूसरा जो हमारा मैग्नेटिज्म वाला फिनोमेना, दैट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड बाय ऑयस्टर्ड, एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे. सो ही हैज़ फाइंड आउट, फिजिसिस्ट थे, ही हैज़ फाउंड आउट के व्हेन द करंट इज फ्लोइंग उनका मैग्नेटिक कंपास मूव कर रहा है. सो दैट एक्सपेरिमेंट लेड टू फर्दर के देयर इज सम काइंड ऑफ अ फोर्स, सम काइंड ऑफ अ फोर्स दैट इज मूविंग इट. सो दैट लेड टू द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मैग्नेटिज्म. उसके बाद देन द एम्पियर केम, दैट mathematically let the framework of what the Oersted has done in his experimentation. Then the most revered figure in the development of electricity and magnetism came the Faraday. Faraday was never a physicist. He was just he loves doing a lot of experiment. He started from a very humble family and he built up by the curiosity and the sheer perseverance into the experiment, into the science. ठीक है, तो बस he just wanted to experiment. तो yes, keep on experimenting a lot of things. Then because of that only he led to the development. Because of his experiment we are into the modern age. Because of him only we have got this okay, whenever there is a change in magnetic field and the electricity produces. So that experiment has led to from the dark ages to the modern sciences. ठीक है, फिर then उस framework को Maxwell has mathematically joined all this framework of Oersted, Ampere and Faraday. ठीक है, इन तीनों के जो experimental framework को Maxwell ने एक beautiful mathematical equation में coined out किया. And then he also put across कि electricity and light is also kind of a electromagnetic wave. देन जो फाराडे ने अपने लॉज दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, that law has been developed into technology by Tesla and Edison. That electricity that we are seeing today, the alternating current, the DC, the direct current, that has been technologically proceeded by the Thomas Alva Edison and Nikola Tesla. So because of electricity only, electricity is kind of a base which is providing all the modern sciences to us, all the modern tech equipment to us. So that base का जो पीछे की जो साइंस थी, that was provided by Faraday, because he was so much curious about knowing the things despite not having a very scientific background, but he is having the curiosity to know the things, so he was keep on doing the experiments and all. Then that led to the development of electricity by Nikola Tesla and Thomas Alva Edison. फिर उसके बाद से ही we have seen the development in our modern equipments. We have seen lot of new equipment started coming in that not only led to the advancement of our journey towards the physics. हमारे जितने sophisticated instrument अब बन गए हैं, we could able to examine the things in a better manner. So it is just because we have entered into the modern tech age, because of all the work done by all our physicists and because of their curiosity only. ठीक है, so this later in the recent ages we have seen our Albert Einstein, he has linked electricity and magnetism with the relativity. So he said that magnetism is nothing but the relativistic correction of electricity only. So that is also quite an amazing phenomena that he has presented with the special theory of relativity, okay, how electricity and magnetism has been related. And our Richard Feynman, he has done a latest development in the quantum electrodynamics. Okay, so that is what it's been the journey of our electricity. It started from the static electricity, and it was never inquired. It was done by Thales. So he rubbed an ember from the animal fur, and he see after that rubbing, when he bring it near to the small bits of straw and dry leaves, they got attracted. So it was just he
he has done it, but it was never been scientifically inquired. Even some magnetic ore was there that was attracting the iron in that during the time of before Christ only, but it was never been scientifically inquired or never been proceeded, because I've told you there are other things to be proceeded. So motion को study करना था, because we never understood the gravitational forces, how these planets are moving, how the sun is moving, how the moon is moving. So we want to study all those things first. So we have studied those things. 1500 में न्यूटन ने जब अपना प्रॉपर लॉज दे दिए थे एंड ही यूनिफाइड सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल ग्रेविटी, उसके बाद से वी हैव गॉट अ गुड अंडरस्टैंडिंग इन ग्रेविटी. Then we switch our base into the electricity. So electricity mein we have seen okay, that's how okay, first static electricity we have inquired, then we have inquired into the electricity, then we have inquired into the magnetism, and then we unified both of them, electricity and magnetism, and we entered into the modern tech age. Okay, so that is how we have grown from there. And all this phenomena which is happening, it was observed but never been understood initially. Okay, then later on we have led to the discovery of the charge, which was the fundamental in all this electrical and magnetic interaction. It is a fundamental entity which led to the electric and the magnetic interactions. Okay, so that is a fundamental property of matter. Like mass is a fundamental property of matter, so charge is also a fundamental property of matter. So the because of charge only all this electrical and magnetic effects is been visible to us. ठीक है. So now later stages it's been discovered, when the charge is being discovered, so every particle is made up of proton and electron, and they carry the electric charge, and because of this electric charge imbalance we have seen electrostatic interactions. ठीक है, because of the imbalance in the charge. And basically the bodies all the bodies are neutral. Whenever there is an imbalance in the charge, then only we could able to feel the electrostatic interaction, right? So that's all in the intro part. We'll move on to the next. नाउ विल सी के चार्ज के स्टेशनरी होने से क्या उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं. चार्ज अगर यूनिफॉर्मली मूव करे तो क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, और चार्ज एक्सेलरेटेड हो जाए तो क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं. ठीक है. सो चार्ज अगर स्टेशनरी है, सो इट इज़ लाइक अ स्लीपिंग लायन. इट इज़ नॉट मूविंग बट इट्स प्रेजेंस इज बीट फिल्ड. सो चार्ज स्टेशनरी है, सो इट जनरेट्स अ electric field around it. ठीक है. So it is like this charge is there, so it is created a electric field around it. So इसके influence में जो भी आएगा that will get effect of this charge. ठीक है, जो भी इसके influence में आएगा. So it is like a sleeping lion. It is not moving but its presence is filled. Its presence is filled like this electric lines of forces. ठीक है, जो भी इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, जो भी आसपास आएगा, दैट विल फील द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज. ठीक है, एंड दिस स्टेशनरी चार्ज विल ओनली प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स. ठीक है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ओनली प्रोड्यूस करेंगे. एंड दिस चार्ज इज रेडियल. जो इसका जो फील्ड होगा दैट इज द रेडियल फील्ड इट इज गिविंग. ठीक है. So that is stationary charge. It is only giving the electrical effects. ठीक है. Now if the charge is moving uniformly, ठीक है, charge is moving uniformly. Okay, so when the charge move uniformly with constant velocity, it drags the electric field. If you see in this case electric field is like spread it over equally. Now when it is moving, this charge is moving, so it distorted the space around it. ठीक है, यहाँ पे strong हो गई, यहाँ पे strong हो गई, फिर यहाँ पे weak हो गई. It started distorting the space. ठीक है, that twisting of the space, because of this twisting of the space, our magnetic fields will appear. ठीक है, because of the twisting of the space. So the analogy for it, it's like a boat has been traveling in the calm water. ठीक है, it distorted the water from the behind. Like for instance, the boat is traveling like this, so it create a curl behind. If you see, it create a curl around if it's not accelerating. Okay, it is just moving at a constant speed. Okay, it is just moving at a constant speed, so it create a curl around it. Like in the water, it create, if the boat is moving, it create a curl around it. That curl is nothing but my magnetic field if the charge is moving at a constant velocity. ठीक है, and the magnetic field is perpendicular to the velocity. ठीक है, and these. So this phenomena you can relate it with the water curling around the boat. ठीक है, when the boat is moving in the water with a constant velocity, in the calm water with a constant velocity, it creates curl around it. If you see from the back, it creates curl, so that can be related with the uniform motion of the charge. ठीक है. Then the accelerated motion means के the fabric of that calm water, in that if you put a stone and you started doing up and down, so it distort, it will. So if you do up and down, it will. So if you see this, it will distort. If this charge is there, if you do up and down, so it will distort the field. It will distort the field around it. So because of this distortion, this wave started traveling in. ठीक है,
when that charge move up and down, ठीक है, that is when the charge is accelerated, then it created a distorted field around it, and because of that the waves will detach from it and it's been travel in their independent ways. So that is what it has been happening when the charge is accelerated. Okay, so this is what happened when the charge is accelerated. So when the charge is accelerated, it disturbs the electricity and magnetic both, because काम अगर move करेगा, so it generates a magnetism, it generate a magnetic field also, and electric field also will be there. But when it's do an up and down motion, like it's just doing periodic up and down fast motion, it will distort. If you see, okay, on the calm river surface, if you just put the ball up and down on that surface, it will create a distortion around it, and the wave started flowing it like this, ठीक है. So that propagate, this is nothing but the EM waves, ठीक है. When the electric charge is accelerated in the medium, so it generates a electromagnetic waves, ठीक है. That shaking of the space, that ripple is spreading out, that this ripple and the disturbance get detached from it, and it propagate like an electromagnetic waves at a speed of light. So waves detach from the boat. So it is like when the boat is accelerated, so when the boat is accelerated in your water, so the waves got detached from the boat and travel independently across the lake. So when the boat is traveling, so it will, the water, it will, when the boat is accelerating, so these waves will get detached from the boat. earlier जब बोट स्मॉल इस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, तो इसके अराउंड में जो भी कर्व बन रहा था, दैट इज अलोंग विद द बोट. अब क्या होगा, बोट जब एक्सलेट करेगी, सो इट विल स्प्रेड अक्रॉस अ वेव that is separated out from the boat, and it is spreading all over the river. So that is what it's been analogy, it's been used, okay, like when the charge is accelerated in the medium. So that is the accelerated motion, okay. When the charge is accelerated, we have electromagnetic waves. When the charge is uniform, we have charges moving uniformly. So so here we have seen it distorted the electric and magnetic field when the charge is accelerated, okay. When the charge is moving with uniform velocity, it create a curl around it, which is nothing but the velocity, and it's been linked with the boat moving with a constant velocity in the calm water. And if the charge is lying stationary, it is like a sleeping lion, the presence is felt, only the electrical effect can be felt. In this, electrical and magnetic effects can be felt. In this, the electromagnetic waves will be generated. So this is these are the three phenomena on the basis of the motion of the charge is stationary, or on the basis of motion of the charge, right? So now we'll move on to our next. So next we'll see the static electricity. So whenever in the development of electricity and magnetism, the first thing which we have developed, the first phenomena which we have observed is the static electricity only, okay. So that is the charges at the rest, which is the accumulation of the charges on the surface of the object, okay. That is what we refer the static electricity means के जो इंटरमीडिएट फिनोमिना है, दैट हैज़ बीन अकर, नाउ द चार्जेस हैज़ कम टू द रेस्ट, ठीक है. चार्ज का जब भी मोशन हो रहा था, एट दैट पॉइंट वी डोंट कॉल इट अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. वो जो टाइम पीरियड था, वी डोंट, विद दैट टाइम पीरियड इज वेयर द चार्ज इज मूविंग. So that is a different one. When the charge after a long time comes to the rest, at that we studied that phenomena which we call a static electricity. Charge is at the rest when the accumulation of the charges on the surface of the object, ठीक है. How the charges comes from the imbalance of electron and proton in the objects, ठीक है. वो imbalance किस तरीके से create होता है, because of the transfer of electron, because of friction. When you rub one surface to another, so because once both the surface are made up of electrons and atoms के बने होते हैं, atoms is what made up of electrons and protons. तो इस वन सरफेस के ऊपर एटम इलेक्ट्रॉन में भी लाइटली बाउंड, ठीक है, और एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन में भी स्ट्रांगली बाउंड. जिस पे लाइटली बाउंड होता है वो ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन, विच वी कॉल इलेक्ट्रॉन दूसरे सरफेस को, विच वी कॉल अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर स्ट्रांगली बाउंड होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना. तो जो बहुत लाइटली, सो इट डिपेंड्स, जो भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उससे ईजिली यू कैन टेक आउट द इलेक्ट्रॉन.
वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे होता है? थ्रू द मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब हो गया मैंने दो ऑब्जेक्ट को रब किया, बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन गॉट ट्रांसफर्ड, बिकॉज बोथ द दोनों जो मेरे ऑब्जेक्ट थे उसके अंदर जो एटम्स थे दे हैव अ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन का जो बाइंडिंग था दैट इज़ क्वाइट स्मॉल इन वन एंड बिग इन अनदर। सो जिसमें भी कम था मेरा दैट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस द क्लॉथ रब विद द रॉड, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन दिस क्लॉथ इज रबिंग द रॉड, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन गॉट ट्रांसफर फ्रॉम रॉड टू क्लॉथ, ठीक है। सो रॉड के ऊपर मेरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो भी मेटल की बनी होगी वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी लेस, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी लेस. So that's why it transfer the electrons from here to here. Then once it transfer the electron, it will get positive charge, and once you get the excess of electron, it will get negative charge. Okay. So that is the phenomenon of static electricity. Okay, due to the friction that was first observed with the friction only. Okay, with the friction only, that is the first phenomena we have observed in when we rub an amber with the clothes, that is a friction only. Because of that friction only, there is a transfer of electron. Okay, so this is a phenomena of static electricity. सो इफ़ मोर एंड मोर चार्जेस स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग, सो जैसे जैसे चार्ज स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग होते जाएंगे, सो फोर्सेस बिटवीन देम विल स्टार्टेड बिल्डिंग इट अप. लाइक जितना चार्ज बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब होगा कि वो उतना ज़्यादा स्ट्रेस सिचुएशन में आता जाएगा, बिकॉज इट वॉन्ट्स टू गो टू इट्स लीस्ट स्ट्रेस स्टेट. और जितना आप उस पर चार्ज देते जा रहे हैं दैट मीन्स आप उसका स्ट्रेस लेवल और बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट पे जाके इट विल गेट डिस्चार्ज, इट विल गेट स्पार्क. सो दैट स्पार्क एंड ऑल यू हैव सीन during the time of rainy days when there is a high voltage wires, you seen a spark. So that means high voltage that carries a huge amount of charge, those high voltage wires. So whenever there's a wet environment, so that excess amount of charge will get transmitted to the ground, because of that air will start conducting because of the wet atmosphere. So the same it happened in the lightning case also. So excess of charge get transferred to the earth because of now the space work as a conductor, because the space has become wet. Okay, so this is what when more and more charge accumulated, so when you keep on adding, that means के एक point पे जाके वो फट जाएगा and it will spark and discharge. So forces started building up on that. Okay, so now we'll see the static electricity which was on the conductor and the insulator. कि अगर हम conductor पे if we give a charge to the conductor, so what will happen to that, and what if we give a charge to the insulator, what will happen to that. So conductor is the electron highway, we can say. Electron highway means it will let the electron pass through, ठीक है, it will not stop the electron easily उसके ऊपर से आ जा सकते हैं. it will easy way for the electron, ठीक है. it cannot hold the charge. So जैसे ही आप इस पे आप कोई भी चार्ज देंगे, the charge will get onto the surface, ठीक है. it will dissipate quickly to the surface only, ठीक है. so इसके दो तरीके हैं देखने के. so suppose if you given a positive charge to it, so this positive charge will repel to the least stress state. लीस्ट स्ट्रेस्ड स्टेट क्या होगी, जब ये बिल्कुल टॉप मोस्ट बिल्कुल फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे यहाँ पे ऊपर, तो ये तब तक रिपेल करते रहेंगे. अब इससे ज़्यादा तो रिपेल नहीं कर सकते बिल्कुल सरफेस पे आने के बाद, ठीक है. सो जितना सरफेस होगा उसके सरफेस पे आके दे विल बी एट द लीस्ट स्ट्रेस स्टेज. सो ये रिपेल तब तक करते रहेंगे जब तक ये बाहर पूरे नहीं आ जाते, ठीक है. अनदर वे इज़ टू सी दैट कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है मेरा, सो नाउ बिकॉज इट इज़ अ कंडक्टर, सो यहाँ पे कंडक्टर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों होंगे, बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टर. वी हैव गिवन द चार्ज आफ्टर दैट. तो जितने भी ये जो नेगेटिव चार्ज होंगे बाहर, ठीक है, दैट विल गो एंड ट्राई टू न्यूट्रलाइज दिस, ठीक है. यहाँ से न्यूट्रलाइज करना शुरू करेंगे बाहर से, बिकॉज दीज आर द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स दे विल ट्राई टू न्यूट्रलाइज एंड कम ओवर एंड न्यूट्रलाइज इट. सो ये सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल गेट पॉजिटिवली चार्ज. सो से बोथ द वेज यू कैन सी. वन वे इज के दे विल रिपेल, ऑल दिस चार्ज विल रिपेल एंड मूव इट टू द आउटसाइड टू द लीस्ट स्ट्रेस स्टेट. और यू कैन सी के चार्जेस the loosely bound electron outside, because it's a conductor, it can easily let the electron to pass through, negative charges to pass through. तो ये यहाँ से चार्ज होके अंदर की साइड में आ जाएंगे and it will neutralize this positive. तो ये पॉजिटिव ये सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा and the charges जो भी इसके पॉजिटिव जो भी नेगेटिव चार्जेस अंदर गए हैं उसकी वजह से यहाँ पे डेफिशिएंसी आ जाएगी and the positive charges will be created here. Okay, so you can see repel or the negative charges to neutralize the positive charge, both the way we can see, and the final result is okay, they will be come into this state on the surface only, ठीक है. whenever we give a charge to this conductor, the charge will never be hold on to the conductor, okay, it will directly spread over on the surface of the conductor, ठीक है, because surface is the point where it will get a least stressed state, ठीक है. so charge are loosely bound
on the conductor, so it can be easily removed. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा charge is loosely bound, so it can be easily removed and can be moved throughout. That electron can be this loosely bound electron that can be easily moved inside. ठीक है, so move easily throughout the material. And electrostatic condition means कि when अभी तो क्या है, जब जैसे so for instance this charge is moving to neutralize it, or we can say this positive charge is moving out because of the repulsion that will move out up to this point. ठीक है, so जब तक ये मूव कर रहे हैं we cannot call it a electrostatic state. electrostatic state का मतलब है कि जब चार्जेस सारे रेस्ट पे आ गए, जब ये सारे चार्जेस बाहर आ गए ऐसे, this state is called a electrostatic state. This state is a not called a electrostatic state. This is not a electrostatic state because अभी चार्ज का मोशन हो रहा है, अभी there is electric field inside which is pushing them away. ठीक है, अब यहाँ पे स्टेज पे आ गए हैं, तो स्टेज पे देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनसाइड इज जीरो. सो एट दिस पॉइंट व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, वी कैन से दिस स्टेट इज, so we can say this state is a electrostatic state. Electrostatic state in the conductor is when the electric field inside is zero. So that is what we call electric field. हमने पढ़ा नहीं है अभी तक. So electric field is nothing but के it is a field के जिसकी वजह से will feel a effect on the positive and negative charges. ठीक है, so हर charge है अपना एक electric field बनाता है. So because of that some other charge अगर उसके अंदर आएगा influence में, that feel the effect of that field. ठीक है, हम लोग that is a part of once we study the Coulomb forces के बाद we are going to study that only electric field. ठीक है, so this state is we call a electrostatic state. This state is not a electrostatic state. जब तक मोशन चल रहा है और जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो नहीं हो रहा, तब तक उसके अंदर मोशन हो रहा है. जैसी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ऑल द चार्जेस आर आउटसाइड. ओके, so this is my electrostatic condition, right? Next in the insulator क्या होता है, insulator are like a hold charges. they will not let the electron pass away. They will hold the charges. जो भी आपको इलेक्ट्रॉन, they are like a electron prison. जो भी आप इनको चार्जेस दोगे, so insulator में के the electrons are not loosely bound. के it can be easily be it can, like here in this case electron are transferred from here to neutralize this positive. Now it will not be the case. Electron are strongly bound, so tightly bound atoms, so electrons are also tightly bound. So electric field penetrate but do not let the charge move. ठीक है, so for instance इस केस में अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दूंगा, so this bound surface पे these electrons are not bound to free, they will not go inside. और this ये जो पॉजिटिव चार्ज है, this is not bound to move out. ठीक है, इतना रिपल्शन नहीं क्रिएट कर पाएंगे, that they will move out. ठीक है, so in the insulator this will not happen. तो insulator में जहाँ पे मैंने चार्जेस दिए हैं, so it will stick there only. तो यहीं पे चार्जेस रह जाएंगे, it will not go out. So now in this case electric field will be there inside the insulator. Electric field will not be zero inside the insulator. Okay, in electrostatic condition जब ये charges यहाँ पे मैंने दिए इसको, when I have given the charges, so it will be at a rest situation. तो in the rest situation also electric field inside insulator will not be equal to zero. Inside the insulator will not be equal to zero, but in the electrostatic condition electrostatic field inside the conductor will be zero. Okay, so the charge is localized here, but charge is spread over on the surface on the conductor. In the conductor charge will be spread over. Here the charge जहाँ पे दिया होगा वो उसी पोजीशन पे जाके रुक जाएगा, बिल्कुल लोकलाइज्ड रहेगा, वो कोई स्प्रेड ओवर नहीं होगा in the insulators. ठीक है, next we'll move on. We'll now study the fundamental property of the matter, which is charge, and we are going to study the further properties of charges. Okay, so first is we are going to study the electric charges which led to the electrical and magnetic interaction. So it is a fundamental property of matter, it led to the electric and magnetic effects. So basically the charge normally it is a neutral atom होता है. We have same number of electron and same number of protons in most of the neutral atoms, in all the neutral atoms. So यहाँ पे देखा हमने same number of electron, same number of proton होता है, but when you disturb this neutrality, that means when the electron got transferred to one place to another, so one surface will get more electron, it will get negatively charged. Another surface will be deficient of electron, it will get positively charged. So that can be you disturb the neutrality of it by the friction between two surfaces. You have done applied the mechanical energy which because of this friction S1 and S2, where S1 will lose the electron
and its mass will also decrease because electron is having the mass. So whenever the electron get loose, so mass of that surface will of that metal will also be decreased. Okay, so when it lose the electron, it will get positively charged and it will lose the mass also. Okay, mass will also be removed from here because electron is having the mass. And S2, it will gain the electron, mass is going to increase and it will get negatively charged. Gaining of the electron is negatively charged and losing of the electron is positively charged. And mostly जो transfer होता है, that is because of the moving of the electrons only, not for the positive charges, because positively charges are strongly bound in the nucleus by the strong nuclear forces. So it is you have to provide huge amount of energy to रिमूव अ पॉजिटिव चार्ज. सो दैट्स वाई जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन, जो भी डिसबैलेंस होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का डिस्टर्बेंस होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द मूविंग ऑफ चार्जेस, मूविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ओनली. सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मेरा लूज हुआ, वील नॉट से कि प्रोटॉन और प्लस चार्ज मेरा ट्रांसफर हुआ. इट इज़ द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, इट विल गेट पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, इट विल गेट नेगेटिवली चार्ज. और इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, मास विल गेट डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, मास विल गेट इंक्रीज. So transfer of electron from S1 to S2 will depend on the electronegativity to which we have seen कि जो strongly bound, जो metal strongly bound होगा, वहाँ से it was difficult to remove the electron, so वो positively charged हो जाएगा. So जहाँ पे easily remove हो सकते हैं, जहाँ पे strongly bound है, वहाँ से remove नहीं होगा, the electron will transfer to that surface, so it will get negatively charged. So it depends, the transfer of electron will depends on the electronegativity कि कितना strongly bound है वो, कितना strongly bound है उसका electron with the atom. Now we'll see the properties of electrical charges. So electrical charges की पहली property है, it is transferable, so it can be transferred from one surface to another. ठीक है, as we have seen कि suppose this rod is having the negatively charged, so when the rod is negatively charged, we can say it is like a stress situation. ऐसे consider करो, it is like a for instance, whenever we are going to say कि some body is charged and we are touching that body or transferring the charges, so just consider this situation. Suppose this beaker is there and you connect it with the empty beaker, so there is a knob is there which you have protected the water flow. So इस beaker के अंदर मेरा वाटर है, ठीक है, एंड दिस बीकर इज एम्प्टी. व्हेन यू रिमूव दिस, तो क्या होगा, ये बीकर का वाटर इसके अंदर जाना शुरू कर देगा, एंड एट सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम बोथ द बीकर विल बी हैविंग द सेम वाटर. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों बीकर के अंदर सेम वाटर, सेम हाइट तक का वाटर आ जाएगा. पहले इसके अंदर अगर 2H था तो इसके पास अब H वाटर आ जाएगा और यहाँ पे भी H वाटर आ जाएगा. सो दैट मीन्स दे आर नाउ इक्वली. सो अब इसके अंदर ये जो एक्सेस यहाँ वाला वाटर है, इट विल नॉट अलाउ टू मूव इनसाइड बिकॉज इसकी वाटर की वजह से देयर इज़ अ प्रेशर बिल्डिंग अप हेयर. सो सेम वे कि यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन होंगे, इट विल स्टार्ट रिपेलिंग एंड इट विल कीप ऑन गोइंग ऑन द न्यूट्रल बॉडी. ठीक है, वो न्यूट्रल बॉडी में जाने शुरू हो जाएंगे. न्यूट्रल बॉडी भी अपनी स्ट्रेस होनी शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे भी रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा. इट विल नॉट लेट मोर इलेक्ट्रॉन्स टू पास ऑन टू दिस न्यूट्रल बॉडी. ठीक है, सो पहले इनिशियल लेवल पे कोई इस पे फोर्स, कोई इसको रिपेल नहीं करेगा यहाँ से बॉडी से, तो यहाँ पे रिपल्शन स्ट्रॉन्ग है, सो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा. फिर धीरे धीरे इस पे चार्जेस बिल्डअप होने शुरू हो जाएंगे और ये चार्जेस ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका अब रिपल्शन जो होगा, बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस रिपल्शन विल बी इक्वल टू द रिपल्शन इन दीज चार्जेस. ठीक है, इस चार्जेस के रिपल्शन के बराबर जाएगा. फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में ट्रांसफ़र खत्म हो जाएगा. ठीक है, बट दे आर ट्रांसफरेबल. अगर इसके पास पहले मेरा 4 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो लेटर ऑन स्टेज पे वी कैन से इट विल बी हैविंग 2 नेगेटिव चार्जेस एंड दिस रॉड विल बी हैविंग 2 नेगेटिव चार्जेस. ठीक है, सो वी कैन से द चार्ज इज ट्रांसफरेबल प्लस इट इज़ ऑल्सो कंजर्व्ड विच वी आर गोइंग टू सी इट हेयर. बट फर्स्ट थिंग इज इट व्हेन वी टच इट विल बी ट्रांसफर टू द न्यूट्रल कंडक्टर. बट इफ इट्स ऑलरेडी बीन नेगेटिवली चार्ज, सो इफ़ इट्स मोर स्ट्रेस देन द चार्ज विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू हेयर. ठीक है, अगर ये ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, ज़्यादा इसके पास पोटेंशियल है पुल आउट चार्ज को रिपेल करने का, देन द चार्ज विल बी ट्रांसफर फ्रॉम दिस बॉडी वन टू द रॉड. ठीक है, now we'll see the charge is conserved. So whenever the system is isolated, charge is neither created nor destroyed, it can only be transferred. So in this case we have seen, suppose इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, so when it is having 0 इलेक्ट्रॉन, जब इसके बाद टच होगा तो फाइनल स्टेज जो आएगी, इसके ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड दिस रॉड विल ऑल्सो हैविंग द 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड. इनिशियली इसके पास थे 4 इलेक्ट्रॉन एंड फाइनल ऑल्सो भी 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. सो टोटल चार्ज विल ऑलवेज बी कंजर्व. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज विल ऑलवेज कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेस.
So if you see this beta decay equation, beta decay क्या होता है मेरा कि neutron got converted into proton, ठीक है. One neutron is there in the nucleus that got converted into proton, and it will release a beta negative high speed beta particle. So it is nothing but a electron which is moving very fast, and a anti neutrino. Sorry, this is anti neutrino. एक बार आएगा इसके बाद. This is anti neutrino. Anti neutrino, we'll see it later on in the modern physics के how why this anti neutrino is there to maintain the conservation of loss. So we'll see it later on, but just try to understand कि how the charge has been conserved. So यहाँ पे जो था मेरा चार्ज कितना था, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इट इज़ 0, एंड यहाँ पे आई एम हैविंग द प्रोटॉन का चार्ज कितना है 1. सो टू बैलेंस आउट दिस चार्ज, दिस बीटा इज देयर, बीटा नेगेटिव, इट इज़ द इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस, ठीक है. So minus plus 1, so it will comes out to be 0. Initial charges are 0. This is chargeless. Neutrinos are massless. These are the massless and chargeless. Neutrino, okay, no, chargeless. So this is an anti-neutrino. We'll study later on, but you'll see the charges before and charges after. Before charges is 0, and after charges are also 0. Okay, charges are always conserved in all your chemical reactions, all your nuclear reactions. Everywhere the charges is always conserved. Okay, in the conduction also, whenever you are doing the conduction, charges will go from one place to another, but overall charges of the system will always be same. Then we'll see the invariance. Invariance का मतलब होता है कि the charge will always be, suppose the charge is there which is having the q value and which is equal to 2 electron, if we say, so this value will remain same if you see it from any frame of reference. आप rest से देख रहे हैं तब भी आपको ये q 2e ही दिखेगा. आप अगर एट अ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट से देख रहे हैं तब भी आपको ये 2e ही दिखेगा, ठीक है. कि किसी भी उससे देखेंगे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, आप किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं तब भी ये 2e ही दिखेगा, और आप किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से देख रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से देख रहे हैं तब भी आपको ये 2e ही दिखेगा. दैट मीन्स चार्ज इज इनवेरिएंट विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आप किसी भी स्पीड से देखें, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, द चार्ज विल ऑलवेज बी स्टेशनरी, ठीक है. सो इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वर, ई रिमेन्स सेम. It will, whether you see it with the rest and or with the high speed, but opposite is the case. Mass varies with the speed. Mass is not an invariance property. The fundamental property जो होती है हमारी mass की, matter की mass, that is not an invariant property. We have got this equation how the mass got related with the velocity. So at low velocity we can say the mass is not increasing, but at very high velocities, almost reaching at a speed of light, we can say this value will be appreciable, which will be same as this. So we can say the mass is, because it is under the denominator, so we can say this value is going to be low, so the mass is going to get increased, okay. So mass is going to, it will comes out to be lesser than 1, the mass is going to get increased as we go near to the speed of light, okay. Right, so mass is variant, even the length and the time is variant. So with the, if you move with the speed of light, your time get short and your length got also varied, so your length will also get contract if you move with the speed of light. So that is a special theory of relativity. So here length or time and mass, these are all the these all depends on the frame of reference. Mass भी आपका, लेंथ भी आपका, एंड टाइम भी आपका, ठीक है. सो दे ऑल डिपेंड ऑन द speed with which you are moving. If you are moving with the speed of light, your length will get contract, your time will get contract, your mass is going to get increased, ठीक है. बट द चार्जेस के ऊपर कोई मेरा चेंज नहीं आता. चार्ज will always be same. So there is one phenomena why the charges are same, कि there is a Noether's theorem which says कि जितनी भी हमारी सिमेट्री है यूनिवर्स में, that is related with some conservation law. So चार्ज का जो मेरा कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ दिस चार्ज which is related with this gauge symmetry, which we call a u1 symmetry or the phase rotation symmetry. So it is from the quantum electrodynamics, so you don't have to delve into it. I'm just giving you this thing. So it is so basically हमारे nature में we have 4 kind of symmetries are there. So one is time symmetry, one is space symmetry, one is rotation symmetry, another one is charge symmetry. So यहाँ पे जो मेरा time symmetry आता है, that is, it is because of the conservation of charge. So this is not charge symmetry, that is a phase symmetry. Because of charge it will come, that is a phase symmetry, or the gauge symmetry, you can say gauge symmetry,
ठीक है। टाइम जो आता है मेरा दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिमेट्री का मतलब है, टाइम का मतलब है अगर मैं एक्सपेरिमेंट 5 अगर अभी कर रहा हूँ या 1 घंटे बाद कर रहा हूँ, 2 घंटे बाद कर रहा हूँ, उसके रिजल्ट सेम रहेंगे, ठीक है। सो दैट gives my conservation of energy because of this time symmetry. Space symmetry gives me conservation of linear momentum p, ठीक है। rotational symmetry gives my conservation of angular momentum l, ठीक है। angular momentum and my phase symmetry is because of conservation of charge, ठीक है। माई फेज सिमेट्री इज बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 4 सिमेट्रीज होती है मेरी। नॉइथर्स थ्योरम इट्स नॉट इन आवर स्कोप, बट आई एम टेलिंग यू कि दीज 4 सिमेट्रीज आर देयर। सिमेट्रीज का मतलब है कि आप लैब का एक्सपेरिमेंट आप अगर ए प्लेस पे कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली में कर रहे हैं तो आपको मुंबई में भी करेंगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सो दैट इज गिव्स द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, अगर आप एक लैब में कर रहे हैं, इफ यू रोटेट दैट लैब विद सम एंगल 30 डिग्री एंगल पे, यू विल ऑल्सो गेट द सेम रिजल्ट। सो दिस रोटेशनल सिमेट्री is because of the angular conservation of angular momentum. Then we have the phase symmetry, that is because of the conservation of charge. Because of the conservation of charge, what is this symmetry called? It is called a U1 symmetry, ठीक है। U1 symmetry because of phase rotation, that is the reason behind the invariance of charge, ठीक है। another issue which will come if the charge will be velocity dependent, because charge any atom contains proton and neutron, positive charge and negative charge, and because if the mass of electron is less than mass of proton, so velocity of electron will be very high than proton. So if the velocity of electron is very high than proton, then electron will have a tendency to move out, so it will damage the neutrality of the atom, ठीक है। it will damage the neutrality of the atom, so that is also a reason the charge is invariance, okay। so 3 properties हमने देखी कि charge is transferable, charge is conserved and charge is invariance, ठीक है। so invariance के पीछे का reason क्या है, one is it is the U1 symmetry, ठीक है। so that is one of the reason, conservation of charge, it is linked with the symmetry. Another one is say it is going to damage the neutrality because the velocity of electron will be more than the velocity of proton. That means okay, it will move faster than the proton, that will lead to the damage of neutrality, okay। now we'll move on to the next property which is another important property which is called a quantization. Quantization का मतलब होता है it is kind of a packet, like this is the minimum value, you cannot go further than this. So quantization is also because of this symmetry only. If we say it is because of this symmetry only, the reason behind it, but quantization is, you can say it is quantization of charge, because charge, electron, proton are made up of quarks only, and the quark can be made jo quark is like they appear in the combination only, and they will always give the integer value of electron only, ठीक है। but quantization का basically मतलब है it is a step wise process, ठीक है। step wise process, it will not a continuous process, it is not a continuous process, it is a step wise process, means it is not a continuous fluid, there is a discrete packet which is minimum value उसकी कितनी है e, ठीक है। तो वो e की टर्म्स में आएगा, so that means charge will store the value of n times e, ठीक है। it will not take any value of which where n is not an integer, ठीक है। n should always be integer, so it will not take 1 by 2 e, it will not take 3 by 4 e, so these values are not valid, so only e will be 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 1000 e, so these value will only be valid, ठीक है। n should always be an integer, so minimum value जो होगी चार्ज की that is e, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का charge, ठीक है, 1.6 into 10 to the power minus 16, so that is a minimum value of a charge, so we call it a quantization, so that is a quantization. So my charge is not a continuous flow, it comes in a discrete packets, और उसका जो minimum quantity होता है, so if you see this is my charge, so इसके अंदर this is my small electrons, how many electrons, so overall charge will comes to be the same minimum value of this electrons, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 into 10 to the power -16 कूलम होता है, ठीक है। इसके पूरे समेशन से वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ आवर टोटल चार्ज q इज इक्वल टू n into e, ठीक है। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज, वी एड इट, they are additive and we add them algebraically only, we take the sign and value, ठीक है। so for instance if there is a -2 coulomb charge, +5 coulomb charge, -1 coulomb charge, if they all
combine. So overall charge of the system will be +5 -3 is my +2. ठीक है. So overall charge of the system, we just do a algebraic addition, simple algebraic addition. There is no vector addition required. Simple charge will be added algebraically. Okay. So these are the 5 properties of charges: transferable, conserved, invariance, my quantization and additive. Okay. Now we'll see the next topic, which is our charge distribution. कि how the charge get distributed in a isolated conductor and a isolated insulator. Isolated का मतलब the conductor will not transfer the charge to any other body. ठीक है. If this conductor will get touched with some other conductor, so it has a tendency to transfer the charge. ठीक है. But here it is an isolated conductor, so max charge will be stored onto it. ठीक है. It will not got transferred, so can't transfer the charge, can't exchange the charge. So if we give some extra plus q net charge to a conductor, so what will happen? So all the excess charges resides on the surface. So that means we have already seen in the previous one. So whatever the extra charge, for instance, if this is my conductor, I've given some extra charge to it. So यहाँ पे क्या है? It is a stress situation. So it will, all the positive charges will repel. Repel means it will repel up to the maximum. कब तक maximum repel कर सकते हैं? So this is a state when they repel to the maximum. इसके maximum surface पे जाके, ठीक है? That is a place where it get maximum. They will separate out. Or another way is to see that because of this, we have not studied that phenomena electric field. So but I'll tell you, the electric field will be generated here in this direction. Because of that, the electron will come into it to neutralize this. And अगर यहाँ से मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे, so that means यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है. जितने मेरे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं प्रोटॉन इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उतने मेरे पॉजिटिव चार्ज मेरे सरफेस पे आ जाएंगे. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी कैन सी कि चार्ज इनसाइड जो होगा दैट विल नेवर स्टे, इट विल ऑलवेज गेट रिपेल टू द सरफेस. ठीक है. यहाँ पे देखा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया एंड ऑल द चार्जेस गेट ऑन द सरफेस, रिपेल्ड अप टू द सरफेस. बिकॉज सरफेस वो लास्ट मेरी बाउंड्री है जिस पे जाके मेरे जो चार्जेस हैं वो मिनिमम स्ट्रेस्ड लेवल पे होंगे. ठीक है. अगर इससे भी बड़ा मेरा कोई चार्ज मिल जाए, फॉर इंस्टेंस नॉन न्यूट्रल बॉडी मिल जाए, तो ये चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होने शुरू कर जाएंगे. ठीक है. बिकॉज चार्ज ऑलवेज नीड्स टू गो टू द लेसर स्ट्रेस सिचुएशन. ठीक है. यहाँ पे ये दे विल रिपेल टू द न्यूट्रल बॉडी पे भाग जाएंगे. ठीक है. तो ना यहाँ पे कोई आइसोलेटेड है, सो दे विल बी ऑन द सरफेस ओनली. और जब तक ये यहाँ से सरफेस पे जा रहे हैं, वी डोंट कॉल इट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन. जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में 0 हो गया एंड दे आर एट द सरफेस ओनली, देन ओनली वी कॉल दिस सिचुएशन, वी कॉल इट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन. Second is when the charge inside the conductor will get 0, electric field inside the conductor will get 0. That state we call a electrostatic equilibrium. Before that we will not call it a electrostatic equilibrium because the charges are in motion. Electrostatic का मतलब charges at rest. So rest पे जब आ गए तभी we call it a electrostatic equilibrium. Charge move until inside electric field will get 0. Otherwise charge will keep on moving until the electrostatic state is being achieved. सो क्यू एक्यूमुलेट. सो एक और प्रॉपर्टी है कि सरफेस पे चार्ज वहाँ पे सबसे ज़्यादा इकट्ठा होगा जहाँ पे शार्प एजेस और कॉर्नर होंगे. सो मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. ठीक है. सो जितना छोटा उसका रेडियस होगा सरफेस का, सो फॉर इंस्टेंस ये मेरे सरफेसेस हैं, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा सरफेस है, उससे छोटा और उससे छोटा सरफेस मतलब कर्व है. इफ़ यू सी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका बड़ा रेडियस है, इसका मीडियम रेडियस. तो जिसका सबसे छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उस पर सबसे ज़्यादा चार्जेस जाके स्टोर हो जाएंगे, और जिसका सबसे कम होगा उस पर सबसे कम चार्जेस स्टोर होंगे, और इस पर मीडियम लेवल ऑफ चार्जेस स्टोर होंगे. सो चार्जेस स्टोरेज मीन्स चार्ज एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन द कि कितना शार्प और कितना कॉर्नर है उस पर. ठीक है. कितना शार्प है और कितना कॉर्नर है. एंड it depends inversely with the radius. It depends inversely with the radius. जितना radius of curvature small है उतना उस पर charge density उसकी बढ़ जाएगी, जितना radius of curvature मेरा small है. because less space is required, because less space is there for them to spread. ठीक है. when it reach up to there they have less space to spread, so they get accumulated in a smaller space only. ठीक है. इसके पास कम space है, it get clumps into a smaller space only. next properties में the entire surface, and inside the surface there is a equipotential, otherwise the charge will flow and neutralize. So this equipotential we have not studied. equipotential का मतलब है कि they both are in the same potential, means कि for instance you can consider it like the same way we have studied ना beaker वाली situation. So यहाँ पे अगर मेरा initial level पे ये मेरा level of water है, sorry if I have it here. ठीक है. यहाँ पे मैंने this is not the, if I have it here and if I close it right now, so once I open this knob, so
right now it is having higher potential because it is having a potential to transfer the water from here to here, तो higher potential है. So यहाँ पे once I open the pipe, so the water get transferred from here to this place. ठीक है, now they have reached their equilibrium situation. At this point both are having the same potential, so now the water will not be transferred to any of them. So if we see if I am having this positive charges, so I can say this is at a higher potential, and if we connect it with this unneutral body, if we connect with the neutral body, so it is having low potential, so high potential, the charges will go to the low potential, and at suppose initially it is having 100 potential, it is having 0, so ये इस पे ट्रांसफर होता रहेगा जब तक ये दोनों का पोटेंशियल 50-50 नहीं हो जाता. और वी कैन से कि चार्जेस पे तब तक जाते रहेंगे तब तक इस पे कुछ चार्जेस ऐसे ना आ जाए कि ये चार्जेस इसको इन चार्जेस के आने को अपोज करना शुरू कर दें. ठीक है, तब तक ये होंगे. एट दैट पॉइंट वी कैन से इट इज़ एन इक्विपोटेंशियल पॉइंट. सो दैट मीन्स कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट मीन्स जब मैंने इसको चार्जेस यहाँ पे दिए, जब मैंने यहाँ पे इसको चार्जेस दिए, इट इज़ नॉट ए इक्विपोटेंशियल पॉइंट, सो इट विल द चार्जेस विल मूव आउट, रिपेल आउट अप टू द सरफेस. यहाँ तक आ गए. सो दिस पॉइंट जब तक ये ऊपर आ गए यहाँ पे, तो दिस पॉइंट इज वी कैन से इट्स अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इनसाइड ऑल्सो इट्स द सेम सरफेस, बिकॉज राइट नाउ अगर अंदर का पोटेंशियल मेरा ज़्यादा है और यहाँ पे कोई चार्ज होगा तो चार्ज विल मूव आउट बिकॉज ऑफ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा, देन इट्स पोटेंशियल विल गेट 0. ठीक है, सो देन वी कैन से कि ये पूरा का पूरा सेम पोटेंशियल पे है, वरना नहीं तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करेगा. सो चार्ज इज़ नॉट फ्लोइंग इन साइड. ठीक है, सो अंदर ऐसा नहीं है लो पोटेंशियल है, अंदर ऐसा नहीं है हाई पोटेंशियल है, बिकॉज इक्वल पोटेंशियल है अंदर और बाहर. अगर मैं कहूँ यहाँ पे भी 100 है और इस सरफेस पे भी 100 है, दैट मीन्स देयर इज़ नो चार्ज फ्लो. सो द चार्जेस आर एट इक्विलिब्रियम पोजिशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजिशन. तो दैट इज बीन सेड. बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला पोर्शन जो है वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्ट. बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मीन्स के चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, कि सेम जैसे हीट होती है ना, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होती है, सो सेम चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ठीक है, सो अगर यहाँ पे कहीं पे हाई पोटेंशियल है, सो चार्जेस विल फ्लो आउटसाइड, और जब तक वो पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता अंदर और बाहर का, दे विल कीप ऑन फ्लोइंग आउटसाइड. सो इस पॉइंट पे जाके अंदर और बाहर का दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है. दैट्स वाई दे बोथ, ये वाला पॉइंट, ये अंदर वाले पॉइंट सारे, ये ऑल द पॉइंट्स, और ये बाहर वाला पॉइंट, ये वाला, सो दे बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल, बिकॉज अब दोनों पे कोई चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा है. ठीक है, सो दे आर एट द सेम पोटेंशियल. एंड ई आउटसाइड, जो बाहर का जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट शुड बी परपेंडिकुलर सच दैट नो सरफेस करंट इज देयर. सो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही होंगी, सो दैट विल बी आउटसाइड परपेंडिकुलर होंगी, या अंदर आ रही होंगी, दैट विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर. सो इससे जितनी भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन. ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है, देन क्या होगा? फॉर इंस्टेंस इफ़ यू हैव अगर ये मेरा सरफेस है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे. एक तो ई परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आएगा और एक ई पैरेलल वाला. और ये ई पैरेलल वाला क्या करेगा ना, यहाँ पे करंट चार्ज फ्लो कराना शुरू कर देगा, यहाँ पे चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा, तो ये सरफेस करंट आ जाएगा. सो व्हेन द चार्ज इज फ्लोइंग, इट इज़ नॉट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, सो वी कैन नॉट से ओके दे आर एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम सिचुएशन, कंडक्टर में क्या होता है, ये दिस विल गेट परपेंडिकुलर. ठीक है, सो यहाँ से जितने भी चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज ओरिजिनेट परपेंडिकुलर फ्रॉम द कंडक्टर. यहाँ से हमेशा परपेंडिकुलर होंगे कंडक्टर से. ठीक है, और दिस फिनोमेना वी हैव सीन कि जितना छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उस पर ज़्यादा ही सरफेस डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. सरफेस डेंसिटी इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माई रेडियस. नाउ वी हैव सीन द कंडक्टर फिनोमेना. सो पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, ये जो परपेंडिकुलर आउट होगा, अगर पॉजिटिव है तो एग्जिट हो रही होंगी, और अगर नेगेटिव है तो एंटर कर रही होंगी. तो यहाँ से अगर ये पॉजिटिव है तो एग्जिट कर रही होंगी यहाँ से. ठीक है, परपेंडिकुलरली एग्जिट कर रही होंगी कंडक्टर से. और अगर ये मेरा इफ़ दिस थिंग इज़ माई नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे दीज आर माई नेगेटिव थिंग्स, सो अगर ये पॉजिटिव है तो एग्जिट कर रही होंगी, और अगर मेरा यहाँ पे नेगेटिव है, सो दिस लाइन्स विल बी एंटरिंग अगर ये नेगेटिव है. ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट इज सेइंग. सो नाउ we are having the isolated insulator. Isolated insulator में क्या है, चार्ज विल गेट बाउंड, इट विल नॉट मूव, सो दे विल बी लोकलाइज्ड ओनली. सो अगर मैंने इसको चार्ज किया, सो दे विल गेट लोकलाइज्ड, यहाँ पे लोकलाइज्ड चार्ज रहेंगे. दे विल जनरेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आल्सो, सो इट विल नॉट मूव आउटसाइड, जो कि हमारे कंडक्टर में था कि चार्ज सारे बाहर पहुँच जाएंगे. इंसुलेटर में चार्ज जहाँ पे दिए हुए वहीं पे रहते हैं, स्टेज वेयर इट इज़ प्लेस्ड. ठीक है, सो स्टेज वेयर इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड इंसुलेटर.
इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी जीरो. सो क्या होगा ना, यहाँ पे जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, सो इसके आसपास वाले इंसुलेटर के आसपास वाले जो मेरे एटम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे. वहाँ पे क्या होगा, सपोज ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे चार्जेस पोलराइज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, इसके नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे आसपास वाले सारे पोलराइज हो जाएंगे इसके आसपास वाले. ठीक है. सो दैट विल लीड टू द पोलराइजेशन नेगेटिव पॉजिटिव. सो ऐसे, सो इट विल लीड टू द, सो पॉजिटिव चार्ज, सो नेगेटिव पॉजिटिव, सो इट विल गेट, सो इट विल क्रिएट अ टाइनी डाइपोल बिटवीन द एटम्स नियर टू दिस लोकलाइज चार्ज. ठीक है. ये लोकलाइज चार्ज के आसपास डाइपोल पोलराइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से डाइपोल, टाइनी डाइपोल का क्रिएशन हो जाएगा. दैट इज व्हाट वी कॉल अ डाइपोल, कि स्मॉल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. अगर ये डिस्टेंस डी है, सो इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस डी है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन, दैट इज व्हाट वी कॉल अ डाइपोल. ठीक है. एंड व्हेन वी गिव अ पॉजिटिव चार्जेस, और ये पॉजिटिव चार्ज इंसुलेटर पे दिए, ये यहीं पे इकट्ठे रहेंगे. सो इसके आसपास के जितने भी मेरे एटम्स होंगे ना, जो इसके आसपास के कंडक्टर के जितने भी, इंसुलेटर के जितने भी होंगे एटम्स, तो वहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी ए नेगेटिव पॉजिटिव का एक डाइपोल बनना शुरू हो जाएगा. पोलराइजेशन स्टार्ट हो गया आसपास के इंसुलेटर के एटम्स में, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे. ठीक है. पोलराइजेशन, टाइनी डाइपोल क्रिएशन, राइट. So that is what it is going to happen in isolated insulator, right? Now we'll move on to our next topic, which is a electroscope. क्या रह गया हमारा, electroscope, charging of a body, ठीक है, we'll finish it today itself. अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक काइंड ऑफ अ डिवाइस है विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नीट्यूड एंड द पोलैरिटी, के वो पॉजिटिव है नेगेटिव, इट इज़ गोइंग टू डिटेक्ट दैट. सो इट्स काइंड ऑफ अ सिस्टम है, अपरेटस है, जहाँ पे एक मेटल बॉल है विच इज़ कनेक्टेड विद दिस मेटल रॉड, और उसके बाद में जाके ये एक गोल्ड फॉइल्स होती हैं, दीज आर द गोल्ड फॉइल्स. ठीक है. सो वी कीप द गोल्ड फॉइल्स हेयर. सो अब क्या होगा यहाँ पे कि हाउ वी विल डिटेक्ट द चार्जेस. सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर मेरी पॉजिटिव रॉड, इफ़ आई एम ब्रिंगिंग द पॉजिटिव रॉड नियर टू इट, सो जैसे जैसे इसके पास आती रहेंगी, सो दैट मीन्स इंडक्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ इंडक्शन इट गेट नेगेटिवली चार्ज. ठीक है. इट गेट नेगेटिवली चार्ज. इंडक्शन का मतलब है कि अभी तक टच नहीं हुआ है, बट ये न्यूट्रल आइटम था मेरे, ये पूरा न्यूट्रल था और ये भी न्यूट्रल था, तो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे. ठीक है. ये सारे, सो एक्सट्रीम एंड पे, जैसे ये वाला एंड पे नेगेटिव आ गए और इस एक्सट्रीम एंड पे पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे. सो जैसे जैसे पास आता रहेगा, इस पे नेगेटिव चार्जेस बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते जाएंगे, और ये इंडक्शन की वजह से डिफ्लेक्ट होती रहेंगी ये वाली लीफ. ठीक है. पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए ना, तो ये डिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे ये मेरी रॉड पास आती रहेगी, और ऐसे ऐसे और पास आती जाएगी, तो मेरे बहुत सारे नेगेटिव ये इंड्यूस हो जाएगा. सेम वे बहुत पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा, तो ये डाइवर्जेंस एंगल और बढ़ जाएगा इसका. ठीक है. और डाइवर्ज हो जाएंगे इंडक्शन की वजह से. अब क्या है, मैं इसको वापस लेके जा रहा हूँ, सो दैट मीन्स इंडक्शन इफेक्ट कम हो रहा है, सो कम चार्जेस यहाँ पे हो रहा है. सेम वे मेरा इंडक्शन इफेक्ट यहाँ पे कम हो रहा है, सो जिसकी वजह से इट विल स्टार्टेड going back to its original situation. So these all three phenomena is because of induction. Now in the next phenomena we are going to touch this rod. ठीक है. We are going to touch this rod. So that is with the conduction. So if I am going to touch this rod on this thing, so first it will do, it is going to neutralize the negative atom. So धीरे धीरे नेगेटिव न्यूट्रलाइज होता रहेगा, नेगेटिव न्यूट्रलाइज होगा. सो दिस यहाँ से पॉजिटिव आएंगे, यहाँ से पॉजिटिव आएगा, सो यहाँ से पॉजिटिव कम होता रहेगा धीरे धीरे. ठीक है. ये पॉजिटिव कम होता रहेगा बिकॉज यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो रहा है ना, ये बिकॉज नेगेटिव था यहाँ पे, तभी यहाँ पे पॉजिटिव था. ठीक है. यहाँ पे जब मेरा पॉजिटिव से, ये जो पॉजिटिव रॉड थी मेरी, इससे ये टच कर दी मैंने, सो यहाँ पे जितना भी नेगेटिव था दैट इज़ गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड. सो यहाँ पे हमने देखा था ये चार्ज जो है इट इज स्टार्टेड, जैसे जैसे ये मेरा टच किया, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो रहा है, जैसे जैसे नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो रहा है, सो दिस पॉजिटिव विल आल्सो बी स्टार्ट डिक्रीजिंग, और धीरे धीरे इट विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर. और फिर कंटिन्यूसली अगर मैंने इसको रॉड को लगा के रखा हुआ है, तो नाउ एक लेवल के बाद जाके जब मेरा सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव सारा जीरो हो जाएगा, ये दोनों टच कर जाएंगे, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव इस पर नीचे फ्लो करना शुरू कर देगा. ठीक है. और फिर इस पर दोबारा पॉजिटिव आना शुरू कर देगा एंड इट विल स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग. ठीक है. सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, पहले जो है मेरा व्हेन इट इज़ पहले इंडक्शन की वजह से इस पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, और फिर जैसे ही ये मेरी रॉड इस पर टच करती है, दिस पॉजिटिवली चार्ज रॉड इस पर टच करती है, तो ये नेगेटिव न्यूट्रलाइज होने शुरू हो जाएंगे. नेगेटिव न्यूट्रलाइज होने शुरू हो जाएंगे, दैट मीन्स दिस पॉजिटिव विल गेट जीरो. सो ये दिस पॉजिटिव इज बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्जेस ओनली ना. सो this all negative will get neutralized, or this leaf will started getting closer. ठीक है. because this positive charge will started reducing, this positive will started reducing. फिर धीरे धीरे
एक लेवल के बाद जाके जब ये सारे नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ये दोनों बहुत क्लोज आ जाएंगे, फिर उसके बाद ये रॉड है इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफ़र जो पॉजिटिव चार्जेस ट्रांसफ़र करने शुरू करेगा आप अपने, ठीक है। पहले तो सारे नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देगा, पॉजिटिव ट्रांसफ़र करने शुरू करेगा। जब ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र करने शुरू करेगा फिर इस गोल्ड फॉइल पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे एंड दिस स्टार्टेड एक्सपेंड, दिस स्टार्टेड रिपल्शन इन दोनों के बीच में आ जाएगा देन, और फिर इसमें डाइवर्ज होना शुरू हो जाएंगे। सो negative charges it will neutralize first, so deflection is going to get decrease, then continuous touch रहेगा, so positive charges started flowing, deflection is going to start, ठीक है, deflection is going to increase, right? Now we'll see the next topic, it's a charging of a body, charging of a body. So basically charging of a body can happen, we have seen from three ways. One is we can charge a body through the friction, we can charge a body through conduction, we can charge a body through induction, or we can use induction and conduction both to charge a body. So first we'll see it with the friction. Friction is the charging of a body. We transfer the mechanical energy into, we convert the mechanical energy into electrical energy. Mechanical energy means whenever you are doing the friction, so that mechanical energy which you are using, that because of that friction the electron get transferred, which generate the electrical forces and it convert into electrical energy. सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जो भी हमारा ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होता है उसको हम थीबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं, दैट इज़ अ चार्ज ट्रांसफर बिटवीन द इंसुलेटिंग मटेरियल अपॉन रबिंग, ठीक है। दो इंसुलेटिंग मटेरियल को जब रब करते हैं, अगर वो इंसुलेटिंग मटेरियल की जगह कंडक्टिंग मटेरियल है, दैट मीन्स जो उस पर जो चार्ज स्टोर हुआ होगा दैट विल गेट ट्रांसफर्ड डाउन इन टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी, ठीक है, अगर वो कंडक्टिंग मटेरियल है। बिकॉज वी नीड अ इंसुलेटिंग मटेरियल ओनली, देन ओनली द चार्ज विल बी स्टोर्ड ऑन टू दैट। कंडक्टिंग मटेरियल होगा उस पर पहले सरफेस पे आएगा, थ्रू सरफेस अगर वो किसी और से टच करेगा, किसी और कंडक्टर से, इट विल गेट ट्रांसफर टू द अर्थ बिकॉज ऑफ दैट। सो इफ दिस इज अ कंडक्टर नॉट इंसुलेटर, द चार्ज गेट ट्रांसफर थ्रू योर बॉडी टू द ग्राउंड, ठीक है। सो द होल बॉडी, सपोज इट्स अ वुडन रॉड है, देन द चार्ज विल बी स्टोर्ड ऑन टू इट, चार्ज इस पर स्टोर्ड होगा आफ्टर द रबिंग, ठीक है, चार्ज विल नॉट गो। सो अगर इस पे इफ दिस इज अ मेटल रॉड, ठीक है, मेटल रॉड होगा एंड यू नाउ इफ यू आर गोइंग टू होल्ड दिस रॉड, तब फ्रॉम योर बॉडी द चार्ज विल ट्रांसफर टू अर्थ, ठीक है। देन इन दैट केस द चार्ज विल नॉट स्टोर्ड ऑन टू इट, so the body will not get charged. To make the to make any conductor charge, you need to apply a insulating material here, so that whenever you are going to hold this rod, then in that case you are touching the insulating material, so that stored charge will not be, जो उसके ऊपर surface के ऊपर charge हुआ है, that will not be transferred through your body to the earth, ठीक है। then in that case you can charge a conductor, but there should be an insulating medium between you and the insulating material between you and the hand, ठीक है। so this effect we call a thermoelectric effect, charge transfer between the insulating material upon rubbing, ठीक है। so in that case mechanical energy got transferred into your electrical energy, so total charge is conserved. So whatever the so if you rub two bodies, so suppose two electron got transferred from body A to body B, so body will gain 2 electrons, body will lose 2 electron, but overall charge will be same on both the bodies, ठीक है। charge before and after friction will always be same, so whenever the body lose electron it will get positively charged, whenever the body gain electron it will get negatively charged. So again the inductor, if it's not an insulator, charge transfers through the body and to the ground, so it will not get charged if it's a conductor and if you hold that conductor. सेकेंड चार्ज ट्रांसफ़र इज थ्रू द कंडक्शन, ठीक है। सो कंडक्शन चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होता है, सो इन द कंडक्शन मीन्स यू रिक्वायर टू टच द बॉडी, दोनों बॉडी को टच करना है। सो दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, अगर इफ योर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज कमिंग टू योर न्यूट्रल चार्ज बॉडी, तो यहाँ पे क्या है, हमने इस फिनोमिना को ऑब्जर्व इट विद दिस, इसको ऐसे विजुलाइज करो विद द बीकर ओनली, ठीक है। इसके अंदर वाटर है, सो वाटर विल गो इनटू अनदर बीकर, ठीक है। सो दैट मीन्स this positive charge इस बॉडी पे है, so this positively charge is stressed situation में है, so it will try to repel, ठीक है, it will try to repel, और ये repel करके इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। when they both touch each other, so this positively charge will start going on to this negatively to this uncharged body, वो तब तक जाते रहेंगे जब तक इस पे भी इतना चार्ज ना आ जाए कि it will repel this charge which is coming from this body B, ठीक है। A पे भी इतना चार्ज डेवलप हो जाए कि that will repel away द चार्ज कमिंग फ्रॉम बॉडी है। सो अब दोनों के पास इतने चार्जेस आ गए कि ये इसका चार्ज इधर भी नहीं जा सकता एंड इसका चार्ज इधर भी नहीं आ सकता, दे बोथ रिपेल ईच अदर एंड दिस इज माई फाइनल सिचुएशन। इफ यू रिमूव देम नाउ आफ्टर टचिंग द रिपल्शन, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन हेयर
द इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर टिल द रिपल्शन गेट, टिल दोनों साइड पे रिपल्शन इक्वल हो जाए, कि इसके पास भी पॉजिटिवली चार्ज इतने आ जाए और इसके पास भी पॉजिटिवली चार्ज इक्वल हो जाए, कि दोनों पे रिपल्शन इक्वल हो जाए. और उसके बाद व्हेन यू रिमूव देम से बोथ विल बी पॉजिटिवली चार्ज. सो ये ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज था, नाउ दिस ऑल्सो विल गेट पॉजिटिवली चार्ज व्हेन यू रिमूव देम. ओके, सो दैट इज अ चार्जिंग थ्रू कंडक्शन. राइट, नाउ विल सी चार्जिंग थ्रू इंडक्शन. Okay, we'll see the charging through induction. So induction के अंदर there is no touching required. Without touching you are charging the body. So for instance, this is my neutral body, positively and negatively charged, and this is a motion of, this is my negatively charged body which you are bringing near to the neutral body. Neutral body means same number of protons and neutrons है. Because of induction ये negatively charge है, positive charge इधर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन. ठीक है, नाउ यू कनेक्ट इट विद द अर्थ. तो ये जो ये वाली साइड है आपको अर्थ से कनेक्ट कर दो. अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब है कि अर्थ इज ऑलवेज एज अ जीरो पोटेंशियल. अर्थ के पास जितना भी चार्ज हो सकता है, इट कैन टेक ऑल द चार्जेस, इट कैन ब्रेक all the charges, or you can say कि it can so it will bring, it is having a zero potential. ठीक है, so it is as a zero potential. यहाँ पे it is having high potential because it is holding the charges, जिसकी वजह से repulsion होगा इस charges में, and this charges will flow down to the earth. यहाँ से charges flow down हो जाएंगे और फिर जब ये charges flow down हो गए, आप यहाँ से you remove the earthing हटा दो. आप यहाँ से earthing हटा दी, so then electron will go to the ground. Now you remove the earthing. So यहाँ पे if you see there and you remove this rod, now you will see there is a positively charged here, and this positively charge will be greater than the negatively charged electron, and there is an excess of positive charge here. Right, so in this process neutral charge, पहले आप एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके जा रहे हैं जिसकी वजह से चार्जेस विल गेट इंड्यूस, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गए. अब ये नेगेटिव चार्ज साइड को आपने अर्थिंग कर दी. दैट मीन्स ये जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल रिपल डाउन टू द अर्थ. ठीक है, अर्थ के अंदर चले जाएंगे, and this side will get this when it is getting down getting into the earth, this side will getting more positive. ठीक है, और चार्जेस सप्लाई करेगा, ये और पॉजिटिव होते रहेंगे. फिर एक पॉइंट पे बाद जाके you remove the earthing, so यहाँ पे this side will get more positively, then once you remove the earthing, so this will get positively charged, and you remove the rod, so this conductor will get positively charged, and this conductor will have excess of positive charge. Right, so next we'll do, फर्स्ट विल डू इट द मिक्सचर ऑफ कंडक्शन एंड इंडक्शन. ठीक है, दोनों के मिक्सचर से हाउ द बॉडी विल गेट चार्ज. सो फॉर इंस्टेंस दिस टू स्फेयर्स आर देयर, सो इसके अंदर अर्थिंग नहीं करेंगे, अब विल जस्ट यूज द कंडक्शन एंड इंडक्शन. सो नाउ दिस पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज कमिंग नियर टू दिस, पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज कमिंग नियर टू दिस टू स्फेयर्स. ये इंसुलेटिंग मीडियम, इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़े हुए हैं. सो बिकॉज ऑफ इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और ये लास्ट में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. बिकॉज ऑफ इंडक्शन इफ यू सी ओवरऑल दिस इज नेगेटिव, दिस विल गेट पॉजिटिव. ठीक है, ये आ जाएगा. फिर आप और इसको क्लोज लेके आओ एंड यू जस्ट टच बोथ द सर्फेसेस. ठीक है, अब दोनों सर्फेस को स्फेयर का टच कर दो, एंड यू स्टार्टेड ब्रिंगिंग दिस रॉड नियर टू इट. जैसे जैसे आप और रॉड नियर लेके जाएंगे तो ये अब ये और भी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. सो एंड दिस विल गेट मोर पॉजिटिवली चार्ज because it is now touching, so it will transfer more electron towards this side. ठीक है, it will transfer more electron towards, पहले तो क्या था, बस इसी के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे थे ना, इसी वाले स्फेयर के, दिस स्फेयर ओनली, यहाँ से पॉजिटिव हो रहा था, यहाँ से नेगेटिव. अब क्या हो गया, ये दोनों जब टच हो गए, सो नाउ इस स्फेयर के भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर होंगे, सो इट विल गेट मोर एंड मोर नेगेटिव चार्ज हेयर, एंड विल गेट मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज हेयर. ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू, यू रिमूव द स्फेयर एंड रिमूव द रॉड. ठीक है, व्हेन यू रिमूव द, नाउ आपने स्फेयर यहाँ से हटा दिया, so and you remove the rod, so this will get negatively charged and this will get positively charged. ठीक है, so now but both the charges will be equal in this case. ठीक है, इस केस में हमने देखा था positive will be more, but here both the charges will be equal. Right, so this is how with the conduction and induction you do. First you remove the sphere and then you remove the rod. So once you remove the sphere, sphere को remove किया, still you are having negative and positively charged here, but when you remove the rod and this charge will not get transferred here, so this will get negatively charged, this will get positively charged. Now on this we'll do one question. So initially आपको चार्ज दे रखे हैं 3, A दे रखा है +3 कूलम, B दे रखा है +3, C दे रखा है -C. पहला आपने ऑपरेशन किया, so this question is depending on the conservation of charge. पहला आपने ऑपरेशन किया, A and C टच एंड मूव अपार्ट. A और C को आपने टच किया और दोनों को मूव कर दिया, दैट मीन्स इन दोनों को टच किया, इन दोनों में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके दैट विल गेट, चार्ज का कंजर्वेशन होगा इनिशियल और फाइनल में,
एंड इट विल गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. कितना हो जाएगा 3 माइनस दिस विल बी -3/2 दोनों में. ठीक है, ए प्लस सी एंड दोनों में ए -3/2 दोनों में ए और सी में चार्जेस आ जाएंगे. नाउ यू व्हाट यू डू, यू कनेक्ट बी एंड सी. बी पे कितना है 3, अब सी पे कितना चार्ज था मेरा 3/2. सो नाउ टोटल चार्ज विल बी 3 और ये -3/2 इट विल बी 3/2. इट विल बी 3/2. सो अब इस पे ओवरऑल चार्ज कितना हो गया 3/2 बी और सी पे दोनों पे मिला के, और ये दोनों इक्वली दोनों में डिवाइड हो जाएगा. सो इट विल बी 3/4 + 3/4 नाउ इन बी एंड सी. नाउ फाइनली देखें हमने ए और बी, जो इनिशियली पहले ए और बी रिपेल कर रहे थे, नाउ ए और बी विल अट्रैक्ट बिकॉज ए पे चार्ज अब कितना हो गया, ए पे चार्ज हो गया -3/2 एंड बी पे चार्ज कितना है मेरा 3/4. ठीक है, सो दे विल अट्रैक्ट. और बी और सी जो पहले रिपेल कर रहे थे बिफोर दिस ऑपरेशन, नाउ दे पहले अट्रैक्ट कर रहे थे बिफोर दिस ऑपरेशन, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे. नाउ दे विल अट्रैक्ट बिकॉज ए पे अब चार्ज है मेरा -3/2 और सी पे चार्ज है मेरा 3/4. ठीक है, सो अगेन दे आर अट्रैक्टिंग. पहले भी अट्रैक्ट कर रहे थे ना, ए और सी पहले भी अट्रैक्ट कर रहे थे. दिस इज -3. सो नाउ अगेन दे आर अट्रैक्टिंग, बट देयर इज अ चेंज इन ए एंड बी. ए एंड बी पहले रिपेल कर रहे थे, दोनों पे 3 था, दे विल रिपेल. बट आफ्टर दिस ऑपरेशन ए हैज़ गॉट नेगेटिव चार्ज, बी हैज़ गॉट पॉजिटिव चार्ज, B has got positive 3/4 and they will attract. ओके, सो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कितना होता है कि आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं ए और सी किया, ए और सी का कितना टोटल चार्ज है -6 + 3 इज -3. -3 को दोनों में डिवाइड करना है, दैट इज -3/2 -3/2. ठीक है, सो दैट इज हाउ योर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हैपन्स. ओके, नाउ एक दो क्वेश्चन है, जैसे कैन बॉडी लाइक विद लाइक चार्जेस अट्रैक्ट. सो हमने अभी तक देखा था कि ओनली पॉजिटिव और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. तो यहाँ पे पूछा गया कैन द बॉडीज विद लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, और कैन द बॉडी विद अनचार्ज बॉडी अट्रैक्ट द अनचार्ज बॉडी. कैन वन बॉडी अट्रैक्ट द अनचार्ज बॉडी एंड कैन द like charges attract each other. So answer for both is yes. Same like charges also attract. So here it is the body, we are not talking about one point charge, it is the body we are talking about. So it contains lot of positive and negative charges. So because of induction, charge distribution effects, because of that charge distribution effects we have different set of forces here. ठीक है, so इसमें because we are using a body word, it is not a point charges. ठीक है, so in that case, so body with like charges can attract, it can attract, and the bodies can attract a uncharged body also. How it will do, we will see. So suppose this big body is there which is having plus q charge, and a small body is there which is having minus q charge. Because it is a big body, so इसका इंडक्शन इफेक्ट ज़्यादा होगा. सो यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव इंडक्शन इफेक्ट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. सो पॉजिटिव और नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस इंडक्शन जो चार्जेस होंगे, सो इनके जो फोर्सेस होंगी बिकॉज ऑफ इंडक्शन विल बी मोर देन द फोर्सेस बिकॉज ऑफ देयर प्लस एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड कैपिटल प्लस क्यू के रिपल्शन की वजह से जो फोर्सेस होगी वो कम होगी. बट ये जो इंडक्शन की वजह से फोर्सेस आई है, बिकॉज रिपल्शन की वजह से इसके सेंटर ऑफ मास दूर है, सेंटर ऑफ मास दूर है ना यहाँ पे दिस. सो बिकॉज ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास इज अवे, repulsion forces will be less, and induction की वजह से this, if you see all this charges got concentrated here. So यहाँ पे if you see their distance will get reduced. So because of that, force due to induction is greater than force due to repulsion. Forces due to induction of charges is greater than forces due to repulsion. So this charge plus q will get attracted towards this capital plus q. ठीक है, so inductive effect attractive. सो सेम वे सेम हम लोग अनचार्ज बॉडी के लिए भी कर सकते हैं. सपोज दिस इज अ चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज. सो अनचार्ज बॉडी में क्या होगा, इंडक्शन की वजह से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिवली चार्ज देयर रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से देयर सेंटर ऑफ स्फेयर्स विल गेट शिफ्टेड, सेंटर ऑफ देयर चार्जेस का कंसंट्रेशन शिफ्ट हो जाएगा. सो वी कैन से इट्स चार्जेस गॉट कंसंट्रेटेड हेयर, चार्जेस गॉट कंसंट्रेटेड हेयर. सो this positive and negative will attract each other. ठीक है, this positive and negative because of this induction effect they will attract. So test for electrification means के we have to see the repulsion. So we have seen के uncharged body को भी attract कर रहा है. ठीक है, so we never know कि whether this body is charged or uncharged. अगर आपको इस body को charge और uncharged बताना है, so with the attraction you cannot do. If the body is repulsion is the true test of your electrification. ठीक है, whether this body is charged or not charged, okay, only through the repulsion you can get to know, not through the attraction, because attraction can happen with the like charges bodies also, and attraction can happen with the charged and uncharged bodies. Okay, so repulsion आपका it is a true test of your electrification, right? एक क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे कह रहा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन न्यूट्रल
फाइंड द पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो एक मोल के अंदर हाइड्रोजन गैस में कितने एटम्स होते हैं, बिकॉज H2 इज देयर, सो 2 हाइड्रोजन एक मोल के अंदर 2 एटम्स हो गए इसके, ठीक है। सो 2 मोल हो गए, दैट मीन्स 4 एटम्स हो गए, ठीक है। सो 2 मोल में आई एम हैविंग 4 एटम्स, और एक एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर, एक एटम के अंदर दिस मेनी पार्टिकल्स आर देयर, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर देयर। सो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए, 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। सो दिस इज माई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल होंगे इन माई 2 moles of hydrogen gas. So positive charge is nothing but 2n into 2 into 6.023 into 10⁻23 to 2. This is the number. Okay. Now I have to find out the proton number of this is the total charge on the 2 mole of hydrogen gas. This one 2 into 4 into 6.023 into 10, so 4 into 6.023 into 10⁻23 is my total number of n. This is my n, ठीक है। If I multiply it with 1.06 into 10⁻⁻16, if I multiply by this, I'll get the value of total charge, ठीक है, total charge, positive charge present. So this positive, I'll multiply this number n by E, I'll get the value of my total charge, Q charge present, because positive and negative both are equal. Right, this is clear. Now we'll see this question. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 प्लेट्स हैं, वन इज इट इज माई अर्थेड प्लेट, सेकेंड इज माई कनेक्टेड विद अ हाई वोल्टेज जनरेटर विच इज जनरेटिंग अ पॉजिटिव साइन। तो जैसे जैसे पॉजिटिव साइन जनरेट करता जा रहा है कंटिन्यूसली इट इज जनरेटिंग, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता रहेगा फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। For because of the induction it is having the positive, so because of induction it will be having the lot of negative charges. Okay, so now it has been said ke these are the conducting plates. So now it has been said कि tennis ball covered with a conducting plate, एक tennis ball है, it is covered with a conducting paint से बनी हुई है, so it's a tennis ball है। So we have to find out what will happen with the tennis ball if this is the situation. So if you slightly deflect, what will be the situation if right now इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, बट इट इज एज अ सेंटर, सो दोनों चार्जेस दोनों साइड के मेरे इंडक्शन फोर्सेस विल बी इक्वल। नाउ यू स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, ठीक है, इधर की साइड डिफ्लेक्ट कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव था, सो जैसे जैसे डिफ्लेक्ट किया तो ये वाली फोर्सेस बढ़ती रहेंगी, तो दिस साइड ऑफ इंडक्शन फोर्स विल ग्रेटर देन दिस साइड ऑफ इंडक्शन फोर्स, दिस एफ डैश। सो ये वाली जो फोर्सेज होंगी, सो ये वाली इधर की साइड में अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, जैसे मैंने स्लाइटली शिफ्ट किया, यहाँ पे ऑलरेडी इस पर नेगेटिव चार्जेस है, तो जैसे मैंने शिफ्ट किया ये वाली फोर्स, लेफ्ट वाली फोर्स बढ़ जाएगी राइट वाली से, सो इट विल कीप ऑन मूविंग एंड स्टार्टेड टचिंग दिस इंडक्शन प्लेट, ये टच करना शुरू कर देगा, तो इस पर जितना भी नेगेटिव चार्जेस था पहले न्यूट्रलाइज हो जाएगा सारा, और फिर ये सारी की सारी बॉडी मेरी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। जैसे फर्स्ट नेगेटिव चार्ज विल गेट न्यूट्रलाइज, देन इट विल गेट पॉजिटिवली चार्ज, because the positively charge will started flowing into it। जब ये इतना पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, नाउ दिस इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, इट विल रिपेल, ठीक है। अब ये बॉल रिपेल करके फिर जैसे इसने यहाँ से रिपेल स्टार्ट किया पॉजिटिवली चार्ज, इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेगेटिवली चार्ज, तो दिस बॉल विल फ्रॉम हेयर इट विल गो डाउन अप टू हेयर, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। नाउ इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, सो ऑल द पॉजिटिवली चार्ज विल गेट न्यूट्रलाइज विद दिस नेगेटिव चार्ज, ये पहले ये पूरा न्यूट्रल हो जाएगी बॉल, फिर इट विल गेट नेगेटिवली चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज इतना हो जाएगा, देन इट विल स्टार्टेड रिपेलिंग, फिर इट विल स्टार्टेड मूव हेयर, फिर जैसे जैसे इधर मूव करती जाएगी फिर ये इधर आ जाएगी, फिर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी, फिर पॉजिटिव होगी, सो इट विल कीप डूइंग अ टू एंड फ्रो मोशन हेयर लाइक दिस, इट विल कीप ऑन डूइंग अ टू एंड फ्रो मोशन। Okay, so that is what it is going to happen here. So for instance, tennis ball is there, if it's get left deflected, left to deflect होगी, तो because of attractive positive plate positive है and the charges induced will be negative on the ball, ठीक है, तो जिसकी वजह से there is लिए attraction force आएगी, so ball will touch the positive plate, ठीक है, conduction होगा, conduction की वजह से इसके अंदर will start having the first neutralize होगा and then start having the positive charges on this ball, जब ये यहाँ पे आके टच हो जाएगी, सो पॉजिटिव चार्जेस बढ़ने लगेंगे, देन विल हैव द रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा इस बॉल में और प्लेट में, दिस बॉल एंड प्लेट विल बी हैविंग रिपल्शन, देन इट विल रिपेल्ड टू अनदर प्लेट, फिर अनदर प्लेट में क्या होगा, पहले नेगेटिव इसमें इट विल कीप ऑन मूविंग टू द अदर प्लेट, जैसे जैसे अदर प्लेट पे जाएगा दैट विल गेट टच विद द अदर प्लेट, इट विल गेट द पॉजिटिव चार्जेस हेयर विल गेट न्यूट्रलाइज्ड, द पॉजिटिव चार्जेस हेयर गेट न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है,
पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होंगे, देन अगेन आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन दिस बॉल विल स्टार्ट गेटिंग द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, देन इतना नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, दिस बॉल विल स्टार्ट रिपेलिंग द प्लेट अगेन, जैसे ये प्लेट रिपेल करेगी देन इट विल अगेन मूव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट, सो दिस प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. Okay, so this is all for today. This is our first lecture in electrostatics, electric fields and charges that we have studied. So we'll take a quick review. हमने क्या क्या देखा. So we have seen an introduction के how the electricity got developed right from the initial level of discovery that we have done in 600 BC. तो उसके बाद up to 1700 there was no scientific inquiry into the force that attract, the invisible force that attract. Then later on after 1700 we have started getting into it and we have started inquiring okay, what is this invisible force, and we concluded that because of this charge or charge के disbalance की वजह से this attractive force is coming and we have built up the electricity phenomena, and from that electricity phenomena when the charge started moving we have developed the magnetism phenomena, and then we have developed the electromagnetic phenomena which got later unified by Maxwell. ठीक है, फिर हमने आज के में लेक्चर में देखा चार्ज अगर स्टेशनरी है व्हाट विल द इफेक्ट्स ऑफ दैट चार्ज, चार्ज मूविंग है इफ इट्स मूविंग विद constant velocity or if it's accelerated what are my effects. We have seen the first phenomena that has been observed is the static electricity, how the static electricity happen and how it is different on conductors and insulator. Then we have specifically studied the properties of charge. What are the charge is a fundamental property of matter, and what are the properties of this charges that we have studied. Majorly we have studied the invariance of the charge, we have studied the quantization of the charge, the transfer of the charge, the conversion of the charge, and the addition of the charges algebraically. Then we have studied the charge distribution on conductor and insulator. अगर conductor और insulator पे charge देते हैं, how it got distributed on conductor and how it got distributed on inductor. Conductor work as an electron highway and this acts as a electron prison. It holds the charges, it will let the charges pass through onto the surface. Then we have studied this device electroscope which will tell you the polarity of the charge and which will help you in finding the magnitude of the charge with the deflection of the cold foil. Then we have in the last study the charging of a body. Charging of a body can happen through three ways. One is with the friction which we call a thermoelectric effect. Then we can say another way is to do the with the induction we can charge a body, and the third way is to do it with the conduction. So that is what we've seen it here. Okay, so that's all for today. That's our lecture number 1. In next lecture we'll study Coulomb's law. Coulomb's law पढ़ेंगे and we'll apply the Coulomb law concepts in some questions. Okay, so I'll meet you up in the next lecture. Till then, all right, thank you.